हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग सीखेंगे जावा फाइल। जावा फाइल क्यों सीखेंगे? तो पहले क्या होता था, जितना भी कोड हम लोगों ने लिखे है ना, जितना भी वेरिएबल हम लोगों ने यूज किए, उसका डेटा कहाँ पे स्टोर होता है? उसका डेटा स्टोर होता है रैम में। अभी रैम का प्रॉब्लम क्या है? रैम का प्रॉब्लम ये है कि जब तक पावर है तब तक डेटा स्टोर है। व्हेन पावर इज ऑफ, डेटा इज लॉस्ट। लेकिन मुझे तो डेटा को परमानेंटली स्टोर करना चाहिए। आई वॉन्ट टू स्टोर डेटा परमानेंटली इन द कंप्यूटर। इसका मतलब है कंप्यूटर को ऑफ कर देंगे, कल कंप्यूटर को ओपन करेंगे, फिर भी मुझे डेटा मिलना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग को यूज करना पड़ेगा फाइल। फाइल में क्या होता है? फाइल में डेटा इज स्टोर्ड परमानेंटली इन द हार्ड डिस्क। तो दोनों में अंतर क्या है? एक में डेटा स्टोर होता है रैम में, पावर ऑफ, डेटा इज लॉस्ट। और अभी जो हम लोग सीख रहे हैं, इसमें डेटा कहाँ स्टोर होता है? डेटा स्टोर होगा हार्ड डिस्क में। तो पावर चला भी जाए तो नो इशू, बिकॉज डेटा इज स्टोर परमानेंटली एंड वी कैन रिट्रीव द डेटा नेक्स्ट डे और एनी टाइम वी वांट। तो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट इज फाइल हैंडलिंग इन जावा अलाउज प्रोग्राम टू स्टोर डेटा परमानेंटली बियॉन्ड द टेम्पोररी लाइफ ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। मतलब जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है तब तक वेरिएबल का वैल्यू स्टोर है। प्रोग्राम फिनिश्ड, डेटा इज ऑल्सो लॉस्ट। लेकिन फाइल में ऐसा नहीं होता। फाइल में प्रोग्राम खत्म भी हो जाए, नो इशू, डेटा इज परमानेंटली स्टोर्ड। सबसे बेहतर इसको समझने के लिए तुमको कोड देखना पड़ेगा। एंड आई एम एज्यूमिंग दैट यू ऑलरेडी नो सम बेसिक कोडिंग ऑफ जावा। Now, Java I/O means input-output stream follows a stream-oriented approach where data flows in the continuous sequence like water through a pipe. जैसे पाइप में डेटा, पानी बहता है, सिमिलरली डेटा एक stream-oriented approach में बहता रहेगा from your keyboard to the hard disk। और जैसे तुम इनपुट दोगे उस तरह से ये बहते हुए ये हार्ड डिस्क में स्टोर होगा। Now there are two concepts. One is input, another one is output. दोनों मिला के क्या होता है? दोनों मिला के होता है I/O, input output. Now input means reading data from source. कैसे? From keyboard, file or network. Like input means I'm now recording the video. So I'm giving some input and it is stored in the hard disk. Now output means writing data to destination. So suppose I'm printing a file. That is the concept of output. मतलब कंप्यूटर से डेटा बाहर आ रहा है, that is the concept of output. In Java, all these operations are done using streams. Stream क्या है? Just now I told you what is stream. A stream is a flow of data that moves from one place to another. Now there are two streams. One is input stream, another one is output stream. तो input stream में क्या होता है? Used to read data into the program. That means reading from the file or keyboard. आउटपुट स्ट्रीम में क्या होता है? आउटपुट स्ट्रीम में डेटा तुम्हारा हार्ड डिस्क से बाहर आता है। तो कहाँ पे आएगा? कंप्यूटर स्क्रीन में आ सकता है, प्रिंटर में आ सकता है। दैट इज द कांसेप्ट ऑफ आउटपुट स्ट्रीम। तो टू कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। वन इज इनपुट स्ट्रीम, अनदर वन इज आउटपुट स्ट्रीम। Two more concept is there. One is byte stream, another one is character stream. So byte stream means byte. Look at the spelling, B-Y-T. Byte is a combination of binary data. Correct. So इसमें क्या होता है? 8 बिट मिला के एक बाइट होता है. Like in byte stream, used for binary files like images, videos, executables. These are some binary files. तो इस तरह का डेटा स्टोर करने के लिए तुम्हें बाइट स्ट्रीम चाहिए। Next one is character stream. Suppose you want to store some characters, some text files. तो इसके लिए तुम्हें क्या चाहिए? Character. So movie. If you want to store a movie, if you want to store a image, store an image, तुम्हें चाहिए byte stream. तुम्हें अगर एक लेटर स्टोर करना है, text file, for this you need character stream. Correct? Next is byte stream में different classes है. One is file input stream, reads data from a file byte by byte. Next is file output stream,
ये क्या है? राइट्स डेटा टू अ फाइल बाइट बाय बाइट. तो इनपुट स्ट्रीम मीन्स रीड्स डेटा फ्रॉम अ फाइल एंड इट इज द रिवर्स राइट डेटा टू अ फाइल. तो इट इज राइटिंग डेटा इनटू द फाइल. और यहां पे क्या हो रहा है? इट इज कमिंग आउट ऑफ द फाइल. तो इनपुट स्ट्रीम, अनदर वन इज आउटपुट स्ट्रीम. नेक्स्ट इज बफर्ड इनपुट स्ट्रीम. बफर्स इनपुट डेटा फॉर फास्टर परफॉर्मेंस. बफर क्या है? बफर इज बेसिकली आर टेम्पोररी स्टोरेज. तो पहले डेटा बफर में स्टोर होता है. तो बफर इनपुट स्ट्रीम इज सिमिलर टू द फाइल इनपुट स्ट्रीम, फाइल आउटपुट स्ट्रीम. File input stream, it is similar to this, but it stores data in a buffer. Next is buffered output stream. Buffer output stream is similar to the file output stream, but it is assumed to be more efficient. Next is data input stream. Data input stream, data output stream में क्या होता है? It allows reading and writing data in the form of integer data, float data. इस तरह का डेटा ये स्टोर करता है. करेक्ट. इसमें डेटा स्टोर होता है बाइट में, इसमें स्टोर डेटा होता है बाइट में. और इट यूजेस द फैसिलिटी ऑफ द बफर. इट ऑल्सो यूजेस द फैसिलिटी ऑफ द बफर एंड इट बेसिकली यूज द डेटा लाइक इनपुट, फ्लोट, दिस तरह का, दिस काइंड ऑफ थिंग्स. कहाँ पे यूज होता है? ये देखो, थोड़ी देर पहले मैंने देखा है ना. ये देखो, ये है डेटा. करेक्ट. डेटा इनपुट स्ट्रीम, डेटा आउटपुट स्ट्रीम. इट डील्स विद सम डेटा, नॉट कैरेक्टर्स. दिखाई दे रहा है? इंटीजर डेटा. ओके, नाउ लुक एट दिस कोड. पहले मैं सिखा रहा हूं कि क्या हो रहा है. सी, द जावा फाइल एंड द सैंपल फाइल शुड बी इन द सेम फोल्डर. यहां पे हो क्या रहा है? sample.txt बोल के एक फाइल है. नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू रीड? आई एम ट्राइंग टू रीड द कंटेंट ऑफ द फाइल. तो एक एक करके पढ़ेंगे. कैसे पढ़ेंगे? आई नीड fin डॉट रीड. नाउ fin क्या है? fin इज अ फाइल इनपुट स्ट्रीम. नाउ इट इज गोइंग टू रीड द डेटा वन बाय वन जब तक खत्म ना हो जाए, एंड, फाइल एंड ना हो जाए. तो -1 मीन्स ये एंड में पहुंच गया. अभी जो डेटा इसने पिक किया उसको कन्वर्ट करेगा कैरेक्टर में, कैरेक्टर. करेक्ट. एंड इट इज गोइंग टू प्रिंट द डेटा. अगर फाइल नहीं मिला तो इट विल गिव यू एन एक्सेप्शन कि फाइल नहीं है. व्हाई यू आर आस्किंग मी टू रीड अ फाइल जिसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है. करेक्ट. चलो मैं दिखाता हूं. ट्राई टू अंडरस्टैंड द कोड. आई होप दिस कोड इज प्रेजेंट हियर. हाँ, दिस वन. Going to execute this code. This is the code. Going to save this. Okay. मैं चला रहा हूँ इसको. कंपाइलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसको रन करो. नहीं होगा क्योंकि इफ आई लुक एट दिस फोल्डर, देखो यहाँ पे सैंपल टेक्स्ट बोल के कुछ है ही नहीं. तो क्या रीड करेगा? कुछ नहीं रीड करेगा. एरर है ना, बिकॉज दिस फाइल इज मिसिंग. हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? चलो इसको मैं लिखता हूं. तो आई ओपन दिस फोल्डर एंड क्रिएट अ न्यू फाइल. फाइल का नाम क्या है? sample.txt. सैंपल फाइल. करेक्ट. sample.txt. इसके अंदर क्या डालें? कुछ टू राइट समथिंग. error occurred, create the file. हाँ, इसको मैंने सेव कर दिया. ठीक है. मैं इसको अभी चला रहा हूं. देखो मैंने कंपाइल किए. वेरी गुड. कैन नॉट फाइंड द स्पेसिफाइड फाइल स्पेसिफाइड. अच्छा, open this file. डिलीट कर देता हूं. Now try to execute. Compile. Yes.
देखो व्हाट इज द कंटेंट ऑफ द फाइल। देखो फाइल का कंटेंट क्या है, फाइल का कंटेंट है सर आई कैन नॉट कम ऑन संडे, तो वही आउटपुट वही है ना। ओके चलो इसको मैं और चेंज कर देता हूँ, संडे को मैं कर देता हूँ ऑन मार्च। What is happening? It is picking the characters in the form of a file stream। तब तक पढ़ेगा जब तक ना एंड ऑफ फाइल रीच करे। करने के बाद ना इट पिक्स वन कैरेक्टर एंड इट पिक्स वन बाइट एंड कन्वर्ट दिस इनटू कैरेक्टर। कैरेक्टर में कन्वर्ट कर रहा है और प्रिंट कर रहा है। चलो इसको देखते हैं। तो ये जो है ना सर आई कैन नॉट कम ऑन संडे शुड बी सर आई कैन नॉट कम ऑन मार्च, ये होना चाहिए। देखते हैं, कंपाइल किए फिर रन, देखो ये आ गया ना मार्च, दैट मीन्स इट इज रीडिंग फ्रॉम द फाइल, करेक्ट। आई एम एक्सप्लेनिंग द कोड अगेन। ओके इट स्टार्ट्स विथ import java.io.start। ये हेडर फाइल है, पैकेज है, क्योंकि आई एम यूजिंग सम कंसेप्ट। ये देखो ट्राई, आई ऑलरेडी टॉट यू ट्राई कैच ब्लॉक, तो ये ट्राई ब्लॉक और ये कैच ब्लॉक। अगर फाइल नहीं मिला तो इट विल गो टू द कैच ब्लॉक एंड गिव एन एक्सेप्शन। और नीचे क्या हो रहा है देखो, मैंने लिख दिया रीड ईच बाइट एंड प्रिंट एज ए कैरेक्टर। ये है टाइप कन्वर्शन, दिखाई दे रहा है ना कैरेक्टर आई, तो एक्चुअली टाइप कन्वर्शन इज हैपनिंग। पिक इन बाइट कन्वर्ट इनटू कैरेक्टर। तो खत्म होने के बाद ना वंस आई रीच टू द एंड ऑफ द फाइल व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली क्लोज द प्रोग्राम। सो इट इज fin डॉट क्लोज। नाउ fin क्या है, fin इज बेसिकली अ फाइल इनपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट, करेक्ट, वेरी गुड। तो वी राइट इनटू वी रीड फ्रॉम द फाइल। ओके नाउ इसमें क्या करेंगे, विल ट्राई टू राइट समथिंग इनटू द फाइल। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, फाइल आउटपुट स्ट्रीम। अच्छा चलो इसको चलाते हैं। तो ये चलना चाहिए, करेक्ट। आई वांट टू कंपाइल दिस। ओके व्हाट इज द फाइल नेम, फाइल नेम इज output.txt। तो जो भी मैं लिखना चाहता हूं, व्हाट आई वांट टू राइट दिस, ये किस पे जाना चाहिए, जाना चाहिए output.txt में। पहले देखो इसमें output.txt है कि नहीं, नहीं है, ठीक है, नो इशू। I'm going to run। अच्छा I need to specify the path। अच्छा illegal escape character। okay so we need to change this to rename java codes। कैंसिल नहीं होगा, ओके storing this into applet।
फाइल में प्रॉब्लम है, इसलिए हम लोग डेटाबेस में चले गए। It's going to work. Make it simple. कंपाइलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट शुड रन। यस, डेटा सक्सेसफुल रिटर्न टू फाइल। फाइल का नाम क्या है? output.txt। तो ओपन करो, जावा कोड्स में गए, देखो output.txt है ना, इसके अंदर क्या लिखा है? हेलो वी आर लर्निंग जावा फाइल, करेक्ट। हम करते हैं, I'm going to change this. We are learning Java output concept। तो ये चेंज हो गया। देखो फाइल में क्या लिखा है, ये ना हेलो लर्निंग जावा फाइल। नाउ दिस शुड बी चेंज टू हेलो वी आर लर्निंग जावा आउटपुट कॉन्सेप्ट्स। बंद कर देता हूँ, कंपाइल करो, रन करो, वेरी गुड। तो हो गया आउटपुट। देखा? तो व्हाट इज हैपनिंग? वी गेटिंग द सेम कंटेंट जो जावा फाइल के अंदर है, वही देखो फाइल में लिखा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द टू कोड्स। द फर्स्ट कोड वी रीड फ्रॉम फाइल, इन दिस केस हम लोगों ने राइट टू फाइल, फाइल में फाइल के अंदर कुछ हम लोगों ने लिखा है, करेक्ट। ओके, नाउ व्हाट इज हैपनिंग? देखो जो जो मैंने कोड लिखा है ना, इसको मैंने कमेंट देके मार्क कर दिया, जैसे कि क्रिएट आउटपुट फाइल स्ट्रीम, फाइल आउटपुट स्ट्रीम। यहाँ पे लिखा क्या? कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू बाइट्स एरे, क्योंकि जमा तो होगा बाइट्स पे। नाउ आई एम राइटिंग दिस इनटू द फाइल। काज खत्म हो गया, देन फाइल इज क्लोज्ड। नेक्स्ट इज देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ रीडर एंड राइटर। तो फाइल रीडर एंड फाइल राइटर reads character data from the file, writes character data to the file. Buffered reader, buffered writer, and the print writer writes formatted text easily. Reader means superclass for all character input stream. Writer means superclass for all character output streams. Now this is the code I am using, the buffered reader. देखो buffered reader कैसे काम कर रहा है। The same code will be reading the sample file, करेक्ट। जो सैंपल फाइल पहले हम लोगों ने क्रिएट किए थे, उसके अंदर कुछ कंटेंट था, इट विल बी बेसिकली रीडिंग फ्रॉम द फाइल। तो जब तक नल ना हो जाए तब तक ये फाइल पढ़ता रहेगा और फाइल का कंटेंट स्क्रीन में प्रिंट करता रहेगा। देखो इसमें डिफरेंस क्या है? देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप कन्वर्शन, इट इज जस्ट प्रिंटिंग इन द स्क्रीन। और यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे देखो कन्वर्शन हो रहा है ना, यहाँ पे फाइल इनपुट स्ट्रीम था, इसमें कैरेक्टर कन्वर्शन हो रहा है। बट इन दिस केस बफर रीडर में देयर इज नो टाइप कन्वर्शन। Sorry for the disturbance. Now I'm going to execute the same code. जो भी लिखा है इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, ओपन द फाइल। फाइल क्या है? सैंपल। इसके अंदर और भी कुछ मैं डाल देता हूं। यस, देखा?
तो फाइल के अंदर जो भी कंटेंट था, इट इज गोइंग टू रीड द कंटेंट एंड इट इज प्रिंटिंग इन द स्क्रीन. वो कैसे रहा है? इट इज बेसिकली यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ बफर्ड रीडर. बफर रीडर मीन्स रीड फ्रॉम टेक्स्ट फाइल. करेक्ट. ओके, नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे राइटिंग टेक्स्ट टू अ फाइल. इसमें हम लोग यूज करेंगे फाइल राइटर. करेक्ट. तो व्हाट आर द थिंग्स वी लर्न? देखो, द फर्स्ट कोड वी लर्न फाइल इनपुट स्ट्रीम. नेक्स्ट वी लर्न फाइल आउटपुट स्ट्रीम. नेक्स्ट वी लर्न बफर्ड रीडर. Next we learn FileWriter. This will write something in the file. देखो क्या लिखा है, FileWriter writes character directly into the file. अच्छा, चलो देखते हैं कैसे काम करता है ये. See, this is the code. I'm going to write this. हो गया कोड. अच्छा, कंपाइल किया. What is the file name? फाइल नेम इज student.txt. देखो इसके अंदर student.txt नहीं है ना? इट विल बी क्रिएटेड. देखो इट इज सेइंग student.txt इज क्रिएटेड. क्या लिखा है? व्हाट इज रिटन हियर? जावा फाइल हैंडलिंग एग्जाम्पल, फाइल राइटर क्लास इन एक्शन. जो भी लिखा है दैट विल बी प्रिंटेड इन द these two lines will be, these two lines, not this one. These two lines will be stored in the file. चेक करते हैं. है ना? These two lines stored in the students file. Okay. students.txt file will be the same folder where Java file is stored. सब एक जगह में जमा होगा ये. Next is buffered output stream. Correct. So buffered stream wrap around basic streams to make I/O more efficient. They store data in memory temporarily before reading or writing, reducing the number of direct disk operations. This is example of buffered output stream. इससे पहले हम लोगों ने क्या सीखा? Buffered reader. Correct. We learned buffered reader. This one is buffered input stream. Similarly, if you write this code, then something will be stored into the file. Next is print writer. We have already learned this. Print writer. With this, we write something into the file. कौन सा फाइल? फाइल का नाम है log.txt. We'll be storing some text. कौन सा टेक्स्ट? ये जो टेक्स्ट रेड कलर में दिखाई दे रहा है, ये जमा होगा log.txt फाइल में. Similar to this, I have already executed the codes. चलाओगे तो similar output आएगा. Okay. Now concept is exception. Exception means अगर फाइल नहीं है तो this will give you an error. चलो दिखाते हैं how to deal with exception. Suppose file name is sample1. Now look at this. sample बोल के फाइल है लेकिन sample1 है क्या? नहीं है.
तो इट इज ट्राइंग टू रीड फ्रॉम अ फाइल जिसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है ना. देन व्हाट विल हैपन, इट विल गिव यू एन एरर. क्या एरर? इट विल गिव यू एरर. एरर इज फाइल डज नॉट एग्जिस्ट. चलो कंपाइल करते हैं. इसको कंपाइल किया, फिर रन. इट इज थिंग सिस्टम कैन नॉट फाइंड द स्पेसिफाइड फाइल, क्योंकि sample1 बोल के यहाँ पे कोई फाइल नहीं है, तो यू विल गेट दिस एरर. इफ आई मेक दिस सैंपल, देखो इसको मिल जाए, ये तो मिल जाएगा क्योंकि सैंपल बोल के फाइल है, तो इट इज गोइंग टू वर्क. तो ये एक्सेप्शन. ट्राई कैच, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राई कैच इन द एक्सेप्शन हैंडलिंग केस. तो उसको वो वीडियो थोड़ा देख लेना. डिफरेंस बिटवीन बाइट कैरेक्टर स्ट्रीम, तो ये डिफरेंस लिखा है. एंड द एप्लीकेशंस ऑफ फाइल. Okay, you can pause the screen and can read, but concept remains same, huh? Now, thank you, students.